जिस तरह से सिख कम्युनिटी ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं, they're providing free meals to COVID patients and their families. It's so inspiring and it's so heartfelt. So I think there's only gratitude that I have for all these people. I think right now, to be a part of this war, you don't really need to have any resources. Help one person, that's also enough. सिख भाई बंधु जो है वो सेवा कर रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर हैं, उनको मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जितना उनका शुक्रिया अदा करेंगे कम है, क्योंकि उनके भी घर परिवार हैं, उनके भी फैमिली मेंबर्स हैं। अगर मैं सिखिज्म की बात करूँ या हमारे सिख भाइयों की बात करूँ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सेवा भाव हम जिसे कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मदद के लिए जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हैं। This passion of service, the passion of seva towards the humanity, and it is up to that extent that one can give his life to save others' life. Being a Sikh, हमारा तो ट्रेडिशन है मानवता के लिए सेवा करना और उसके लिए अपनी जान भी देते हैं। Hello and welcome to the special show on the Dil Se Seva Helping India Breathe campaign. As we battle the second wave of the COVID-19 pandemic, the Sikh community has once again come forward to help. This time not with the traditional food langar feeding millions of people, but with the oxygen langar and a lot more medical help. वाहे गुरु के शरण में जैसे आए हूँ ऐसे सारे लोग जितने हैं स्टाफ वाले उतना हर वक्त पूछते रहते हैं, बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे सब डॉक्टर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ सब बहुत अच्छा है। अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसे सेवा मतलब घर वाले भी नहीं करते जितना ये कर रहे हैं। भला करे भगवान इन सब का कि हमारा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ। The sights of suffering are reminiscent of last year, but the Sikh community continues to selflessly work to help citizens of the country. As the second wave of COVID-19 pandemic wreaks havoc across the country, health services are under tremendous pressure and thousands have been left running from pillar to post looking for hospital beds, oxygen supply and medicines. During the first wave of the COVID-19 pandemic, the Sikh community was at the forefront, helping those who needed food. Langar seva that fed lakhs for months. But as India grapples with the second wave, the pandemic creating a huge oxygen shortage, the Sikh community started a drive to help COVID-19 patients with oxygen and other basic health facilities. To combat the shortage of beds and resources in the capital city as it battled the second wave of COVID, the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, along with the Delhi government, set up a 400-bed COVID care and treatment centre at Gurudwara Rakabganj. The facility is equipped with oxygen support and medicines. जैसा कि आपने देखा कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में श्री गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर खोला गया, जिसमें 400 बेड लगाए गए और 400 बेड के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए गए। 5 लीटर से लेकर 20 लीटर तक कंसंट्रेटर्स और मेडिकल सुपरविजन के अंदर जो ट्रीटमेंट यहाँ पर पेशेंट्स को दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस की सेवा साथ में शुरू की गई है, 15 एम्बुलेंसेस डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि लोग यहाँ पर आके अपना इलाज करा सके। और यहाँ इस कोविड केयर सेंटर को हमने LNJP हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने वाले हर मरीज का ध्यान बड़े अच्छे तरीके से रखा जाए।
Shamvati is recovering from the COVID-19 virus. After running fever for over a week, her son brought her to the center for her treatment. घर में तो लगता है कि अगर हम 2 दिन और रुक जाते नहीं तो डॉक्टर साहब हमारा दुनिया पे कुछ नहीं दिखता, फिर हम लोग खत्म ही हो जाते। इतना बुरा हाल हो रहा था हमारा। सारी नर्सेस अच्छे से देख रही हैं, बहुत अच्छे से हमारा केयर कर रही हैं। मेरे पास अभी सैनिटाइजर नहीं था, वो भी मेरे को मिल गया। मेरा मन कर रहा था कीवी खाने के लिए, वो भी मेरे को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने भी ये हॉस्पिटल बनाया है, भगवान उसका भला करे। Health experts have warned that the third wave of the COVID-19 pandemic is inevitable. So it's important that we need to ramp up medical infrastructure so that we don't collapse once again. The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee has started preparing for the third wave of the pandemic. People are from all spheres of life, from all regions. And this is the true seva. I must say that we should get prepared for the third wave also. All NGOs, or religious organizations, or gurdwaras, mandir, masjid, the people should have different kind of meetings among themselves and decide that we have to face the third wave. And what we have seen from 23rd or 24th of April up to till today, it should not happen again. The COVID-19 pandemic has shown that as a country, we need to invest in healthcare. And capacities created in normal times can boost protective and treatment response during pandemics. In hindsight, the DSGMC's effort to provide affordable healthcare to all, a diagnostic center has been set up in Gurdwara Shri Bangla Sahib complex to provide several tests including MRI, CT scan, ultrasound and digital X-ray facilities at reasonable rates for those who can't otherwise afford them. With increasing incidence of chronic kidney disease, the number of patients undergoing dialysis in India is also increasing by 10 to 15% every year. And despite its steadily increasing incidence, kidney disorders are still not a high priority condition in our country. The condition is further worsened by a shortage of operational beds in hospitals and shortage of doctors and paramedics. Worse now due to the COVID-19 pandemic. Anthony Gomes could not have asked for more. His free dialysis began in March this year at Gurdwara Bala Sahib's kidney dialysis facility in southeast Delhi. यहाँ पे मेरे रिलेटिव ने दिया था, मैसेज करा था कि मतलब ऐसा ऐसा है, डायलिसिस सेंटर खुल रहा है जहाँ फ्री डायलिसिस होगा। तो वहाँ पे मैंने उसी दिन आके मैंने फर्स्ट डे आके ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो मैं फर्स्ट डे से ही यहाँ पे मेरा डायलिसिस चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी डायलिसिस है, मतलब हमारी तो लाइफ बन गई है, नहीं तो शायद मैं नहीं बच पाती। The economic factor of treatment and management of dialysis is also a major concern for patients and their families. Many like Anthony and Anu will benefit from the dialysis services that will be offered completely free of charge. No billing or payment counter, wherein all running costs will be covered through corporate social responsibility funds, individual donations and government schemes like Ayushman Bharat. This is the Asia's biggest dialysis center with 100 beds. We have been doing dialysis for the last 2 months for all the patients who are coming to us free of cost. The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee has also set up 4 pharmacies across the capital that will sell medicines at subsidized rates to customers. These pharmacies are called Bala Pritam Dawakhana and is run by trained pharmacists. In another initiative
initiative, the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee also scaled up its efforts to help COVID-19 patients by providing them with a free ambulance service. With the demand for ambulances amid a surge in COVID-19 cases, it resulted in a shortage of ambulances for patients. 15 ambulances are stationed across the capital. It's time for a short break. Coming up next is how the Sikh community always comes forward and helps. Welcome back. With Seva in their heart, the Sikh community has always come forward to help. The sole purpose of their Seva is not to have any discrimination when it comes to caste, creed or religion. In another initiative, the Shri Guru Singh Sabha Gurdwara, Indirapuram in Ghaziabad on the outskirts of the national capital, along with an NGO, Khalsa Help International, started an oxygen langar, offering people the life-saving gas free of cost during the peak of the second wave. हमसे कोई परेशान आदमी नहीं देखा जाता, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। ये जज्बा हमें आया और वाहिगुरु की हमारी देन है। वो निशान साहब है जिसके नीचे हमने लोगों को सांसों का लंगर लगाया। आप समझ सकते हो कि उस टाइम ऑक्सीजन थी तो सांस थे। कोई हॉस्पिटल वाला ना फोन उठा रहा था और ना ही कोई हॉस्पिटल वाला किसी को एंट्री दे रहा था, क्योंकि वो फुल ऑलरेडी हो चुके थे। तो हमने सोचा कि ऑक्सीजन का लंगर ही स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे कम से कम लोगों की जान बचाई जाए, जो इस टाइम लोग सिर्फ ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। तो हमने अपने गुरुद्वारे के बाहर ही रात 11:30 बजे 22 अप्रैल को एक ट्रायल किया, जो पूरा सक्सेस हुआ। तो अभी वहाँ पे गाड़ियों का तांता लग गया। 100-150 गाड़ी उसी टाइम गुरुद्वारे में आई और वहाँ से हमारा ये लोगों की जान बचाने का कारवां स्टार्ट हो गया। After serving oxygen to over 8,000 people in cars, auto rickshaw, a hospital has been set up with all the facilities. The COVID-19 pandemic's second wave has brought so much pain and suffering, but we've seen India come together. There are individuals, corporates, NGOs, organizations who are doing their bit to help as many people as possible. The Ponty Chaddha Foundation is one such foundation who is working relentlessly during these difficult times. समाज में जागरूकता भी आए, जिस जागरूकता से वह निर्भय होकर परंतु सावधानी के साथ इस महामारी का मुकाबला करने में सफल हो। जो इनका ट्रस्ट है वही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो जिनका अलग अलग अपने इलाके में ऐसे महामारी में सब लोग की सेवा कर रहे, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे बेड की हो, चाहे खाने पीने की हो, या हर तरीके की जो भी बात हो, वो आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। The Ponty Chaddha Foundation is one such organization that is working in line with its belief to give back to society and care for people, especially during this challenging time. The foundation has helped with medicines and ration to many gurdwaras in Delhi, Noida and Ghaziabad. Also helped police personnel by distributing sanitizers and oxygen concentrators to Ghaziabad authorities and other medical assistants. They have served people with water in Bulandshahar's cremation grounds. हम सेवा तो बरसों से करे आ रहे हैं और करते रहेंगे, एंड ये हमें एक मौका मिला आपके साथ जुड़ने का कि इस वर्ड को और लाउडली स्प्रेड करा जाए और लोगों को और इनकरेज करा जाए कि आप भी आइए, आप भी जुड़िए और समझिए हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। एंड इस पूरे ग्लोबल इंडिया को, पूरे इंडिया को मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। While the second wave has been terrible for urban India, but significantly disastrous for the rural part of the country, grappling with a surge in cases, the shortage of required healthcare infrastructure has only compounded the crisis. 53-year-old Hariraj, a sugarcane farmer from Amroha in UP, tested positive along with his entire family for COVID-19. Facing a huge challenge in procuring even the basic medicines, Hariraj reached out to the help desk of Wave Industries, which has started an initiative to provide help to the local population. बुखार आया, हल्की सी खांसी हुई, तो कोई ऐसी वो ना करी, तो यहाँ टेस्ट जो कराया उसमें आया
अस्पताल से भी गए, वहाँ से कुछ लाभ नहीं हुआ, वहाँ से फौरन आराम है। It's not only the COVID patients who are struggling due to the overwhelmed healthcare infrastructure, but non-COVID patients are also being provided help by this initiative of Wave Industries along with the Ponty Chaddha Foundation. 59-year-old Sanjeev Bhatnagar, an employee with the Wave Industries, suffered paralysis in the month of May. The family struggled to arrange an oxygen concentrator amid the shortage. Finally, the company managed to provide the help needed to save life of their employee. 3-4 तारीख में जो है इनकी अचानक से जो है मतलब तबीयत बिगड़ गई एकदम से, तो यहाँ हमने धनौरा में जो है मतलब बहुत सिलेंडर के लिए ट्राई किया लेकिन कहीं नहीं मिला हमें। फिर हमने जो है फैक्ट्री में फ़ोन किया तो फिर वहाँ से जो है ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया था। The Wave Industries and Ponty Chaddha Foundation stepped up relief work during the second wave. This includes preparing kits of necessary medicines, along with setting up a COVID facility, COVID ICU beds, oxygen banks. Routine sanitization is also being carried out in the nearby villages. कोरोना महामारी थी, इसने जो सेवा भाव पैदा किया हमारे अंदर, उससे एक नया जीवन जीने का उद्देश्य हमको दिया। क्षेत्र में जो किसान थे तो उनके घर पर पेशेंट आ रहे थे, तो उन्होंने एक ऑक्सीजन की डिमांड अचानक क्रिएट हुई, तो मैसेज आने लगा, तो हमने एक हेल्प डेस्क तैयार की जिस पे अपने सीनियर ऑफिसर्स के नाम लिख दिए और मोबाइल नंबर डाला कि अगर किसी को किसी तरह की आवश्यकता है तो हमारे इस नंबर पर कॉल करें। The Ponty Chaddha Foundation has also been providing help to the local administration to strengthen their fight against the rising COVID cases. एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले पर डे 100 केस आ रहे थे अराउंड, तो उस वक्त काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी था। वेव इंडस्ट्रीज़ वालों ने पूरा सहयोग किया, पहले भी हमारा अस्पताल का सहयोग करते रहे हैं। During the crisis, housing societies stepped up to the challenge, helping residents, creating COVID isolation centers within the colonies. One such was in Ghaziabad's Wave City residential township. ऑक्सीजन के लिए हर जगह लोग भागे फिर रहे थे, इवन मेडिसिन नहीं प्रोवाइड हो रही थी, तो पॉन्टी चड्ढा फाउंडेशन ने हमारे यहाँ कोविड रिलीफ सेंटर खोला, जिसके अंदर हमने 8 बेड का सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, ये सारे हमारे अवेलेबल हैं, प्लस डॉक्टर, नर्स, एवरीथिंग इज देयर। जिसको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, एनीथिंग, इवन मेडिसिन, फूड, कुछ और किसी से नीड हो, उसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार है 24/7। वो उनके घर में होम डिलीवरी करती है, मेडिसिन से लेके फूड से लेके ईच एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइडेड। From round-the-clock sanitization to a full-time ambulance service, the Wave City group came forward to help in this hour of crisis. With a doctor on call, this COVID care center, built specially for the residents in Wave City, ensured immediate help with a bed and an oxygen cylinder at a time when there was a medical crisis in the national capital. कोरोना काल के महामारी के टाइम में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, लेकिन वेव सिटी का सपोर्ट इस काम लेके वेव के जो ग्रुप है या दिलबर्ड हो गई या जो भी इनके मैनेजमेंट टीम है, इनके तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा और ये हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ज़रूरी थी और उन्हें बहुत सही टाइम पे और बहुत ही सराहनीय काम किया। The Sikh community, known for offering food, Guru Ka Langar, has been swift enough to change and help people with oxygen langar and medical help. This is because it's all a voluntary service. Most importantly, whatever seva they do, they always do it truly only from their hearts, which is why it's called Seva Sirf Dil Se.